Good morning, everyone. I hope you can hear me and see me. आप comments में yes या no लिख सकते हैं so that I can know and do the relevant changes. Our expert will be joining us in next few minutes, and then we will start the session. I can see काफी सारे लोग already आ चुके हैं. Thanks अक्षय जी, अनीश जी, संजय जी, श्रीनिवास राव जी for the confirmation. I guess Dev sir is here. Good morning, Dev sir. I hope you can hear me. Hi Anuj, am I audible? Yes, you are audible, but you are not visible. Guys, feel free to drop your stock queries in the comment section. I will be happy to take them up. But एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप डालें अपनी क्वेरी तो थोड़ा डिटेल में डालें. Don't just write stock name. आपने कितने पे लिया है, आप खरीदने का सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं उसको एग्जिट करना चाहिए. If you share more details, तो we will be able to help you in a better way. Good morning, everyone. Good morning. Dev sir will be joining us within a minute. Good morning. I can see काफी सारे लोग आ चुके हैं already. Sir, can you tell me about the Zenith Expo buy or not? Gale and NMDC sale target for the expiry. ये सारी queries हम लेंगे. Let's just wait for Dev sir to join back and then we are good to go. Good morning, everyone. Good morning. Sushma Devi ji, let's just wait 2 to 3 more minutes and then we are good to go. Yes, Ajit ji, definitely we will be discussing KPI Tech as well. दीपेंद्र जी इंट्राडे ट्रेड हम जरूर देंगे, बस देव सर को एक बार आ जाने दीजिए. Yes, Dev sir, you are back. So I guess let's start the session officially. Good morning, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal, and आप मुझे अब से रोज स्ट्रीम पर देखेंगे. And कुछ लोग काफी समय से देखते भी आ रहे हैं. Along with me, we have Dev sir, जिनकी profitability streak काफी ज्यादा है. In last 15 session उनका सिर्फ एक सेशन लॉस में गया है, and we hope कि आज 16th profitable session हो. So good morning, Dev sir. I hope you can hear me clearly. Yes, good morning Anuj. So just to update you, facing some issues turning on my camera. There are some site issues, so maybe we'll have to continue without camera for today. We'll be looking with the technical team tomorrow and we'll resolve the issue. No worries. Yeah. So let's continue. Good morning everyone. We see Nifty at around 0.25% on the upside. Bank Nifty at around 220 points on the upside. Sensex around 216 points on the upside. So this trend has been following from this particular week, if we say, on the last week's closing also. Bank Nifty is giving good momentum, and Nifty is kind of stuck in a moment near to around 23 300 to 23 500 23 600. सो थोड़े दिनों में आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस निफ्टी से ऑलमोस्ट डबल जितना है. अगर निफ्टी एग्जांपल 100 पॉइंट चल रहा है, बैंक निफ्टी उसी जगह पे नॉट 100 पॉइंट्स, निफ्टी अराउंड 0.22% अपसाइड पे है, वही जगह पे बैंक निफ्टी अराउंड 0.50% ऑन द अपसाइड है. सो परसेंटेज वाइज स्पीकिंग प्रीवियसली लास्ट पूरा महीना बैंक निफ्टी थोड़ा कोरिलेशन में चल रहे थे. This month it has been something different. It has been like on the end of the month हम बैंक निफ्टी को ज्यादा परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं. सो ऐसा भी है कि बहुत टाइम से बैंक निफ्टी में मोमेंटम जो था वो मिसिंग था, काइंड ऑफ वो भी कवर हो रहा है. आपको भी पता होगा कि प्रीवियसली बैंक निफ्टी यूज्ड टू गिव गुड स्विंग्स, बट लास्ट 1-2 महीने में बैंक निफ्टी वाज स्लो एंड स्टेडी, नॉट गिविंग ह्यूज स्विंग्स. So it is actually coming back to its track. Talking about few stock counters, right now I have in Watchlist Raymond.
NCLT sanctioned the composite scheme of arrangement between the company Raymond Lifestyle and Raymond Global Consumer Trading. That's the reason I've put Raymond in my watch list. So Raymond को अभी के लिए आप अपने watch list में रखिए. Trade फिलहाल initiate नहीं कर रहे हैं, but at least हम watch list में add करके रख सकते हैं. Already 4% on the upside है, 2722 current rate है. बात करेंगे आज की जो expiry है Fin Nifty की. Again, finance चल रहा है और talking about the levels of today's expiry, Fin Nifty का please note it down. Support will be at around 23,100, then at 23,050. Resistance at 23,200, then at 23,250. Bank Nifty support at 51,500, then at 51,250. Bank Nifty resistance at 51,957, then at 52,250. So these are the two, finance and indices. The levels of the finance indices I have already, noted down, and you guys noted down too. And looking forward to the Nifty index. Let me check. Give me a moment. Nifty support will be around at 23,400, then at 23,250, and resistance at 23,667, then at 23,750. So these are the current levels for all three indices. And talking about the stock counter, जैसे कि मैंने आपको Raymond just एक 2 मिनट पहले बताया था, 4% अपसाइड पे था, 1%, 1.2% का ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, 2744 तक Raymond ऊपर की साइड पे आ गया है. So still you can put Raymond on the watch list. Talking about few more stock counters, हमारे watch list में आप ऐड करके रख सकते हैं Olectra, then HAL भी strong लग रहा है यहाँ से. Then Zomato also performed around 2% yesterday. आज भी around 2% upside पे है. So even Zomato you can add for the watch list. Talking about a strong counter which is good for smaller swings and for those who are actually looking for low risk is Ashok Leyland. और बाकी बात करेंगे तो ऑप्शन में भी हम ट्रेड देख ही रहे हैं, जैसे ही दिखेगा. तो फिलहाल टेक्निकली बात करूं तो एक ट्रेड यहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं which is purely technical. NCC we have seen a volume spike over here. LCC current market rate 331.75. This is a trade, please note it down team. Stop loss at around 325, target at 346. Current market rate 331.75, stop loss 325, target 346. So we have initiated a trade, and we have given few stocks for the watch list. Still figuring out for a option trade. Till then, we can take few queries, Anuj. Sure, sir. I guess आपने Zomato तो suggest किया ही है. I was going to start with Zomato actually. कल in the afternoon session, Sambhu sir gave Zomato as a BTST. So we have a lot of questions about Zomato का क्या करना चाहिए. See, मैं आपको एक अपडेट बता रहा हूँ Zomato के बारे में. कैसा हुआ कि yesterday there was a development in Zepto. ठीक है. So there are few things के जो particular जो हमारा डिलीवरी थिंग हो गया, जो हमारा कंज्यूमर बेस्ड मार्केट हो गया, उसके जो सेक्टर वाइज ग्रोथ दिखी है कल के वो अपडेट के जहां पे Zepto has raised few funds. So there are plenty of things which this sector is developing, and due to that we are seeing a spike in Zomato. So this is what news update is. Okay, talking about technicals, technically also Zomato is seeming to be strong at around 220 levels. We were previously saying this around a month back. Okay, in recent coming months we might see 220, then at 240. Okay, I guess I have solved my camera issue, Anuj.
Yes, I'm we audible? can see you clearly, sir. Yeah. So, sir, the next is KPIT Tech. This was also given as a BTST yesterday by Shambhu sir in the afternoon session. Okay. So KPIT Tech around 0.40% on the upside, currently quoting at around 1615.60. Talking about the levels, we might say on the daily chart, it is positive, it is very strong. It might go up to, in coming few months, we might see around, let me check. We might see around 1700, 1750 levels on the coming months, in the coming months. And on the lower side, we might put the support at around 1520. So next we have Irida. So for now, we can avoid this counter. We should avoid this counter for now. नीचे की साइड पे सपोर्ट इसका 180 पे बना के चल सकते हैं. So 180, 177. So next we have a question from Srinivasji. ONGC bought at 265, 146 shares. Shall I keep or shall I exit? Bought at what rate again, please? 265. 265. So already, Srinivas ji, you are currently in profit. And बात यह है कि अगर आप पहले से हमारा स्ट्रीम देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत. ONGC is one of my favorite stocks. मैंने बहुत बार शेयर किया है. There are few developments to come. And बात करेंगे technically. So technically भी हम अगर देखें, so currently standing it's in its range, जहाँ पे हमें एक upper side पे spike around 285 levels तक दिख सकता है if it follows the trend. So Motherson bought at 165. See again, Motherson it's on a rally thing. We can see around 200, 210 levels for now. नीचे की साइड पे सपोर्ट थोड़ा 10 पॉइंट का रहेगा at around 180 levels. Correct, 180 levels. Perfect. So planning to buy Sakuma Exports. View please. Which one? Sakuma, SAKUMA. So to be very honest, fundamentally not aware about the stock. Speaking about purely technicals, okay, it is currently quoting at around 35.91. Upper side can be around 36, 37 for the current chart. And I would recommend कि वही price पे आप book कर सकते हैं. बाकी अगर कुछ fundamental update है, तो I'm not aware of it. और नीचे की साइड पे इसका support होगा around 32. So support थोड़ा बड़ा है compared to target. So it is better to avoid this counter for now. If it is not fundamentally strong, आप देख रहे होंगे negative side पे भी volumes का spike ज़्यादा है. Sir, Asian Paints at current levels for medium to long term. Asian Paints again, a safe bet जहाँ पे थोड़ा बहुत the rates of the supplies matter. तो थोड़ा बहुत उसके commodities जो required है for paint उसके ऊपर चलता है. And slow and steady stock था काफी टाइम से एक particular range में चल रहा है. आप देखोगे daily chart पे तो. But अगर इसको ही मैं अगर 15 मिनट कर देता हूँ तो it has been volatile. Currently standing near its support level of it is around at 287. It is supported is around 2800. 2800 के पास इसका support है. So currently standing near to its support and ऊपर की side पे resistance at around 2910, 2910. So Zenith Expo can we buy right now? Which one? Zenith Expo. Can you help me with the spelling? Zenith. Pardon? Zenith. Zenith, okay. To be honest, I won't be able to comment on this particular stock, Anuj, because I guess it is
There is no chart for now. One day, let's go ahead for one day. Continuously upper circuits. So I guess we might not be able to comment on this stock for now. So Dabur for intraday. The reason I'll just share the reason for not sharing my opinion on Zenith Exports. Guys, the thing is, when you give a upper circuit for continuously these many days, if I'm not wrong, this is upper circuit, and बीच में ऐसा सुजलॉन के साथ हुआ था. So we had stopped giving recommendations on सुजलॉन. ना ही negative देते थे, ना ही positive देते थे. We were neutral on it. So that's the same reason why I'm not sharing my opinion on Zenith Exports. Yeah, next topic. GMR Infra view for 1 to 2 week. No, I guess I am into something else. Maybe I'll have to go in my software. Give me a moment. Sure, Yep. sir. Yeah. So actually, by mistake, I clicked the future one. So GMR infra for how much time did you say? 1 to 2 week. 1 to 2 week. ठीक है. GMR infra seems positive on the technical chart. Around अपने support के पास ही चल रहा है. नीचे की साइड में support थोड़ा छोटा होगा इसका. अगर आप 1 week ही पूछ रहे हैं तो it is better to shift on this. नीचे की साइड पे इसका support आप लेके चलिए around sir 95 का 95.50 advisable. And ऊपर की साइड पे resistance will be around 99 levels. Sorry, this is for the intraday. For a week view, you might go towards 105 levels for the upper side, and lower side again same 96, 95 would be maximum. 95.50 seems good for support. So BPCL. Again BPCL थोड़ा बहुत वही है petroleum. ऊपर की साइड पे around it will be around 308 3010 sorry 310 308. नीचे की साइड पे it will be around 300 levels. So National Aluminium at 193. Nalco, okay. I guess Nalco हमने last मेरे session में we had intraday trade as the intraday pick for the day. So it performed good. अभी भी 0.5% on the upper side. Nalco के लिए हम एक long term positive चल रहे हैं. Around 210 200 levels चल सकते हैं. इसके लिए chart भी जरूरत नहीं है. So एक 200 210 levels ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे we can see around 180 184 levels as a support. So please tell on comments and I bought at 4280. 4280 bought at 11. Just a second. Just to share an update on our intraday trade first, then we'll go to comments. NCC, we initiated a trade around 331.75, currently quoting at around 334. थोड़ा बहुत मूवमेंट आया है वही वॉल्यूम स्पाइक की वजह से एंड 335.6 का डे हाई किया है. सो वी कैन स्टिल कीप ऑन होल्डिंग इट. जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 346. सो अराउंड 340 के ऊपर आप इसको बुक कर सकते हैं. तो एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में बना रखा है अभी ट्रेड, but still not that much. 2 to 3 rupees is not a good amount of profit what we look forward to. So अभी भी हम होल्ड करेंगे. बात करेंगे अभी Cummins India की. What was the query again? Just give me a second. I need to scroll up a bit. 4280 bought at 11. I guess उन्होंने उल्टा लिख दिया है. अच्छा, I guess futures होगा. Let me check on my chart. Mr. I guess उन्होंने उल्टा लिख दिया है. Bought 11 at 4280. Let me check.
थैंक यू सर। एनी अगर उन्होंने सही लिखा है 4280 को अगर कॉल लिया हुआ है, अगर सही लिखा है तो 9 रुपया चल रहा था, ये सही लिखा होगा अनुज उन्होंने। ओके, मतलब उन्होंने कॉल पर कुछ मेंशन नहीं किया तो हम जस्ट ठीक है, दोनों ही आंसर कर लेते हैं। 4280 कॉल जो जून का क्यूमेंस इंडिया का चल रहा है अराउंड 9.4 रुपीज चल रहा है सर। अगर आपने 11 पे बाय कर रखा है तो आई वुड से आप एक नीचे की साइड पे सपोर्ट इसका रहेगा सर 7.50 एंड ऊपर की साइड पे इसका रेजिस्टेंस ही 12 रुपए का है। तो अगर 12 रुपए ब्रेक करते हैं तो आपको एक अच्छा लेवल जिसमें मिल सकता है। ऊपर की साइड पे ये अराउंड आई गेस काफी ऊपर तक 1750 क्रॉस कर चुका है। तो अगर ये 12 क्रॉस करता है तो यू माइट सी लेवल्स अराउंड 15 to 16। और अगर आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्चुअली अनुज नहीं होगा क्योंकि इसमें वो कहते हैं ना रेट ही नहीं है वो चीज का जो आप बोल रहे हो। ओके या 4280 स्टॉक में रेट ही नहीं आया है तो उन्होंने बाय किया ही नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सही लिखा है। थैंक्स सर। एनी अदर ट्रेड लाइक एक्सेसरी टू बाय नाउ? तो आई गेस अरिजीत ने ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया है इसमें। ओके, बस एक तो रेमंड आज के दिन में आप रख सकते हैं वॉच लिस्ट में। और दूसरा एक और टेक्निकल ट्रेड बताऊंगा जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम द टेक्निकल टीम में ज्यादा करके टेक्निकल ट्रेड्स देता हूं गाइस। सो एलटीएफ में वॉल्यूम स्पाइक देखा है, टेक्निकल ब्रेकआउट अबव 180 लेवल्स एलटीएफ। सो एक्चुअली इसका जो ब्रेकआउट है 180 के ऊपर हमें देखने मिला है। इसका जो करंट मार्केट रेट है इट इज अराउंड 183.7, stop loss at around 181, target at around 189. We have seen a volume spike here. दूसरा हम बात करें, अगर यहाँ पे कोई फ्यूचर करता है तो मैं फ्यूचर का ट्रेड आपको अगर एक आइडिया के लिए बता दूं, सो वी आर पॉजिटिव ऑन बैंक निफ्टी फॉर नाउ। तो अगर आप खुद से ऑप्शन करते हैं तो थोड़ा बहुत कॉल साइड पे रह सकते हैं। अराउंड 300 पॉइंट्स अभी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। वी माइट सी अराउंड मोर 100-200 पॉइंट्स रैली फ्रॉम हियर। सो कॉल साइड पे आप रुक सकते हैं, फ्यूचर बैंक निफ्टी का बाय कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। यहाँ से करंट मार्केट रेट होगा फ्यूचर का 52040.1, स्टॉप लॉस 51970, टारगेट 52,300, 52,300। Sir, I just want to confirm we have given LTF का intraday buy at 183.7, stop loss 181 and target is 189. Perfect. Okay, sir. Yeah. So I guess we have given two intraday cash trades. मैंने future भी आपको बता दिया है कि क्या आप कर सकते हैं and I guess काफी we can take few queries. Sure, sir. Just give me a moment. Guys, if you remember, हमने ओलेक्ट्रा को भी वॉच लिस्ट में रखने बोला था at the beginning of the session, if I'm not wrong. Yes, sir. So ओलेक्ट्रा में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है, so keep tracking it. ओलेक्ट्रा और रेमंड आप रख सकते हैं आज के लिए वॉच लिस्ट में फॉर इंटरडे। सर हुडको फॉर 15 डेज व्यू, आई गेस हमने हुडको के बारे में ऑलरेडी ले लिया है क्वेरी, बट हुडको सर कई बार आ चुका है तो इट विल बी ग्रेट इफ वी कैन कवर वंस अगेन। No, definitely. हुडको अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। हुडको ने आपको एक बार बताता हूँ, आई गेस 1.5 महीने पहले ऐसा हुआ था कि हुडको वाज डाउन बाय अराउंड 8%। इंट्राडे में बाय इवनिंग इट कवर्ड 2%। अगले दिन पे वो इट गेव 10% अपर साइड। सो हुडको जितना भी गिर रहा है उतना वापस रिकवर कर रहा है। And after the developments in the news about the infrastructure thing, when after the election results the news came out कि infrastructure में हम और भी not infrastructure but housing में हम और भी invest करने वाले हैं, वहां से एक आपको bigger spikes दिखने लगा है। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको बताऊं तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये जो पीरियड है हमारा जून का, ये वाला पीरियड, इट वाज द इलेक्शन पीरियड if I'm not wrong, जहाँ पे यहाँ पे हमें डिप मिला था नियर द रिजल्ट, जहाँ पे निफ्टी अराउंड 1800 से 1300 पॉइंट्स के बीच में आफ्टरनून टाइम में, तो वहां पे निफ्टी ने ये परफॉर्म किया था, सॉरी हुडको ने परफॉर्म किया था, वहां से पूरा रिकवर किया है जितना उन्होंने वहां से डाउन साइड पे दिया था। सो अगेन आई वुड से हुडको इज पॉजिटिव। आप 300 लेवल्स तक का इसके ऊपर का रेजिस्टेंस बना सकते हैं
और नीचे की साइड पे इसका सपोर्ट छोटा दे रहा हूँ 268 265. Again, NCC is going up, guys. So, जैसा कि सर ने कहा, according to that, you can book your profits. So, next query we have is Adani Port for swing trade. अदानी पोर्ट. जी आपने सही कहा. एनसीसी में वी हैव सीन अ मूवमेंट 335.25 अभी फिलहाल लेवल्स चल रहे हैं. अडानी पोर्ट. अडानी पोर्ट सपोर्ट एट अराउंड 1420 और यू माइट से 1400 ही ले लीजिए. इसमें सपोर्ट बेटर रहेगा. एंड ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस फिलहाल थोड़ा छोटा 1500 लेवल्स. सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही काफी छोटा है फिलहाल. दोनों ही 50 पॉइंट्स का अप एंड डाउन. So this would be the bought at 636, and please suggest according to 1 month holding. इंडियन होटल राइट. Yes, sir. So जैसे कि आपने बोला ये पर्टिकुलर क्वेरी आई वांटेड टू शेयर अ फीडबैक जो भी हमारे व्यूअर्स है. सो इट इज सजेस्टेड कि आप ऐसी क्वेरी रखिए कि इंडियन होटल्स व्यू फॉर 1 मंथ. अभी फॉर एग्जांपल इनको 1 मंथ का व्यू चाहिए. इन्होंने खाली इंडियन होटल्स पूछा होता और मैं इधर इंट्राडे व्यू देके चले गया तो इट वुड हैव मिसमैच. सो दिस इज परफेक्ट. हमें टाइम फ्रेम बताइए तो हम आपको बेटर गाइड कर पाएंगे. Exactly, sir. Also, I can see a lot of people writing short term, long term. आपका शॉर्ट टर्म एंड हो सकता है जो हमारे एक्सपर्ट है उनका शॉर्ट टर्म में भी अंतर हो. आपको शॉर्ट टर्म हो सकता है 6 months हो, एक्सपर्ट को हो सकता है शॉर्ट टर्म इज 1 to 2 months. It's better to give the duration with the number of 1 month, 2 month, 3 month, 4 month. सो इंडियन होटल वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट. काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. आप ऊपर की साइड पे इसको ऐसा समझ लीजिए अगर 1 महीने की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा 385 सॉरी 685 690 लेवल से आप ऊपर होल्ड कर सकते हैं. एंड सेम अगेन गोस टू द सपोर्ट रहेगा इसका अराउंड अगर 1 महीने की बात कर रहे हैं तो 640 645 लेवल्स. Guys, please note we have given 2 intraday. We have given 1 technical pick for the that is Cummins India, and given NCC and LDF. NCC में we have already seen some movement. LDF में movement आ जाएगा. That's what our expectations is. We did try to take all the queries. जो लोग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में पूछ रहे हैं, we have already given the levels for it. हम लोग मॉर्निंग सेशंस में भी ट्राई, बट इट्स नॉट 100% कि हम ट्रेड देंगे फॉर डेरिवेटिव्स एंड आवर एक्सपायरीज. फोकस इज अराउंड स्टॉक जो कि हमने ऑलरेडी दिया है. पीपल हैव बुक्ड सम मनी आल्सो. So that will be all for the morning session. I can see काफी सारे questions और हैं. You can definitely ask that on Stockroom and our experts would be happy to help you. That will be all. Thanks a lot, Dave sir, for joining and giving us one more profitable session. Considering NCC's movement, I am considering this session as profitable and saying it as well. Thank you everyone for joining in. Don't forget to join in at 2:30 p.m. today. Thank you everyone.